Okay. You can go ahead with So the today's start. newspaper. So starting with the first page of a business standard, I found that today's Sensex Nifty jumps over 3% of each investor wealth, and also each investor wealth crosses 14 trillion rupees. And the top five Nifty gainers are Adani Ports, NTPC, SBI, Power Grid Corporation of India, and Oil and Natural Gas Corporation. The second news is that due to the metallurgical coke that is being imported to India, metallurgical coke is used for manufacturing steel, and it is being imported to India in larger quantities. Because of that, the domestic industries are getting hampered because of this. The third important news was that Indigo is set to host the 81st International Air Transport Association in the year 2000 in the year 2025 in the month of June. In the page of economic and public affairs, the first news that I found important was that Adani Group ventures into the has started venturing into the finance sector with the collaboration of ICICI co-branded credit cards, and it is usually for getting the services from airlines purpose. Second news is that the output cut from the oil producing export countries may not affect India's oil supply. The third news is that due to extreme heat waves, India's manufacturing industries are getting hampered, and the production are being reduced at a slower rate. The fourth news is that in the year of 2025, there is a nominal demand for the Manrega workers. You can turn That's on it, your sir. video. Okay, sir. So what is Manrega? Sir, it is Mahatma Gandhi National Rural Employment Government Scheme. It provides the people jobs, employment. What jobs? You don't see here and there. Like What job? it provide employment to the people, What employment? like any class of workers that are to the rural people, to the area of rural people, like any kind of work that they can use to earn bread and money. For how many days? Sir, the time period I don't know, sir. 100 days. What Okay, you have 100 read days. today, that is a Sensex Nifty jump 3%, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. What is Sensex? Yes, sir. 3% jump. And Sensex is, sir, it's like uh you can say, was it? It's like something that is used to, like, it's kind of graph that predicts the Ah, shares if it will go up or down. what is Nifty? Sensex. Nifty is a group of companies like Nifty 50, which there are 50 So in the big same companies of manner, India. in the So Sensex, it there is contains Nifty. It is under 30. Nifty. There The are listed 30 shares number are of there. companies in the Sensex, isn't it? You are Hmm. getting this. Yes, sir. Yes. Sensex is not a graph. See, Sensex belongs to BSE, Bombay हाँ Stock Exchange. Nifty 50 belongs to NSE. हाँ. So Nifty 50 Now means I now I NSE के now 50 I remember, स्टॉक sir. हाँ. निफ्टी का तो एनएस. और BSE के 30 स्टॉक को आप हाँ. मिलाओगे सेंसेक्स बनेगा. सेंसेक्स. तो सर टॉप एक और 30 होता है स्टॉक सर, वो कैसे 100 परफॉर्म कर शेयर्स रहे के हैं? लिए होता है, वो भी था एक और. VIX, दैट इज अ वोलेटिलिटी. एक सर शायद 100. वो अलग हाँ से होता हाँ, है एक बकेट ये भी जिसमें पढ़ा हम था मैंने कि मिड कैप 100. बनाते हैं. मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100. वो बात अलग है, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर द हम्म. इंडाइसेस. हाँ. So here for the tomorrow you have two topics, ओके. like a 5 trillion economy and bank merger. You have to read about these topics only. 5 trillion economy of India. Yes, and bank merger.
Sir, like what I have to read in that like 5 trillion economy, just basic things that how it reached and how the GDP How it growth rate reached? is It has not currently going reached. on, like Firstly, all these things. Or my prediction is that that it will reach like current it is 3.94 something. yes, you are right. So you have to just get the view that Yes, 5 sir. trillion economy is what, how we will reach, what are the factors who are saying that we can reach, what way we can take for the reaching this thing early, isn't it? Hmm. So let us go with your presentation means Sir, digital second banking. second topic, What second topic is bank merger. digital No, second bank topic is merger. bank merger. Bank merger. Okay. So today we are going with that is a digital banking. So we can start. Okay, here we stopped Hmm. yesterday. Yes, sir. We were going to read NPCI today Yes. in depth. So this is the NPCI. NPCI is an umbrella made by RBI and Yes, sir. IBA. That is a Indian Banks Association. ये दोनों आते हैं and they made NPCI coming together. ठीक है. एनपीएस एक ऐसी अम्ब्रेला Hmm. ऑर्गेनाइजेशन है. ये कब बनी थी? दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2008. एनपीसीआई के आते ही सबसे पहले आया था आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. गेटिंग दिस? देन आफ्टर दैट IMPs. 2008 Yes, sir. 2016 में कई सारी सर्विसेज आई, जैसे यूपीआई आया. ठीक है, यू Hmm. स्टार्टेड पेमेंट विथ यूपीआई इन दिस Hmm. ईयर. आधार पेमेंट सिस्टम आया इसी में, एईपीएस. और काफी सारी चीजें आई थी 2016 में. बट वी विल सी दैट हाउ एनपीसीआई इज वर्किंग. एनपीसीआई से फास्ट टैग भी आया था. फास्ट टैग जो कारों में लगा होता है, ऑटोमेटिक क्यूआर लेके Hmm. डेबिट हो जाता है अकाउंट के उस Yes, पे. sir. ठीक है. Yes, sir. सो यूपीआई Hmm. केम इन 2016, जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन टू पार्टीज बैंक अकाउंट, सिमिलर टू नेफ्ट एंड आरटीजीएस होता है. व्हाट इज द Hmm. डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड नेफ्ट? सर, नेफ्ट में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होती है, आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख अमाउंट है क्योंकि इट इज फॉर ह्यूज फंड ट्रांसफर्स। और सर नेफ्ट में जो इंटरवल होता है वो हाफ एन आवर का होता है, सारे ट्रांजेक्शन हर आवर्ली बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं। बट आरटीजीएस इज एन इंस्टेंट प्रोसेस, लाइक अगर मैंने अभी पैसे भेजे तो इट विल गो इन इन एन इंस्टेंट। ओके. So you are doing good for this. Means you are revising things very much, and you should revise again and again these things. Okay. So it was developed by whom? यस NPCI. सर, यस। NPCI ने इसको develop किया था. And you can do UPI anytime, anywhere. Next is IMPS. IMPS I have told you 5 lakh की limit है. NPCI ने develop किया था. हाँ हाँ। And what? There is यस। a 7-digit MMID होती है, Mobile Money सेवन Identifier, डिजिट एमआईडी है। हाँ। जिससे हम ट्रांसफर एमआईडी, करते हैं मनी. एमएमआईडी। Second is Aadhaar enabled payment system. Using your Aadhaar card, you can transfer money. Getting this? You go to any kiosk and give your Aadhaar सर card, दिस वाज and आल्सो लॉन्च्ड इन 2016, राइट? yes, approximately. You can search for it in which year it launched. But for UPI and ओके। yes, UPI, I am sure that 2016. And this is also APS must be established in 2016. 2000, 2000। Okay, got it this. 2016, yes sir, got it. So Yes sir. APS also And established the IMPS in same. 2008. And what is APS? Means you will go with your Aadhaar card to the nearest kiosk banking, हम्म। that is the retail banking. और हम्म। वहां आप जाओगे, आधार कार्ड दोगे उसको, और मतलब जहां बैठा होगा जो बंदा, एंड पुट योर थम, हम्म। देन you can take money outside, out of your bank. This thing came here. Only हम्म। thumb and Aadhaar card can withdraw your money from your account.
This was also developed by National Payment Corporation of India. नेक्स्ट इज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये एक पेमेंट गेटवे है फॉर आधार स्कीम्स। मीन्स कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली होती है कि हम जैसे किसानों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, है ना, 2,000 रुपए हर 2 महीने में दिया जाता है, समझो ऐसा। तो वो कैसा दिया जाता है, एक आधार कार्ड से किसान को हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सीधा उसको ट्रांसफर कर देंगे उसके आधार कार्ड के थ्रू उसके अकाउंट में। गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे आप समझो किसान हो तो आपका आधार कार्ड हमारे पास होगा, हम सिस्टम में फीड करेंगे और उस आधार कार्ड से लिंक जो भी अमाउंट अकाउंट होगा तो किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे मनी। गेटिंग दिस थिंग? ये भी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ यस, इंडिया ने डेवलप किया एनपीसीआई। था। यस। नेक्स्ट इज भीम ऐप। भीम ऐप यस। इज सिमिलर टू गूगल पे, फोन पे। इसमें आप सब कर सकते हैं, दैट इज यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो, एंड द लिमिट ऑफ व्हाट, मैक्सिमम 40,000 इन अ डे, and you can send up to 20,000 in single transaction. But यूपीआई में कितना लिमिट है, 1 लाख रुपीज, isn't it? Isn't it? So यूपीआई में आप 1 लाख का लिमिट ट्रांसफर कर यस सर, सकते हैं। यूपीआई में 1 लाख लिमिट। There is a VPA, what we call that at the rate Ankit Gupta at the rate YBL, that is called VPA. वर्चुअल पेमेंट। Yes, virtual payment address. One very important system is NACH system, National Automated Clearing House. इसमें जब बल्क में हमको ट्रांजेक्शन करना होता है, मीन्स I have a I have a institution in which 1,000 workers are working there. Okay, और ये मंथ का एंड है जहां मेरे को सबको 100 रुपए सैलरी देनी है, मीन्स सेम अमाउंट ऑफ सैलरी टू 1,000 वर्कर्स। तो हम क्या करेंगे कि एक बार रन करेंगे नैच को, मीन्स नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को रन कर देंगे एक बार, तो सबके अकाउंट में सेम टाइम में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। गेटिंग दिस थिंग? तो बल्क ट्रांसफर करने के लिए नैच का यूज किया जाता है। यस सर। यस। सर मेरे पास एसएमएस आता है, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसमें भी एसएमएस आता है नैच का कुछ ऐसे ही। तो हाँ, वो वो भी यही नैच से ही सेम चीज सेटल होता है। प्रोसीजर फॉलो यस। करता है, यस, दे आर बल्क ऑल्सो में सेटलिंग योर ट्रांसफर वाला। ट्रांजेक्शन विथ नैच। हाँ। तो ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी, क्योंकि बल्क में सब्सिडी दी जाती है, जो हम्म। उज्ज्वला योजना है तो गैस हम्म। सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है बल्क में, तो सीधा सैलरी, यू कैन सी हियर सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। if you will get in mutual fund हम्म। dividend of that share, then you will get the same thing. Okay, हम्म। लेकिन म्यूचुअल फंड में कहाँ ही डिविडेंड मिलेगा आपको, जब शेयर मार्केट लेते हो स्टॉक्स, तब वहां डिविडेंड मिलता है। सो दैट आल्सो हाँ। इज ट्रांसफर थ्रू द नेच। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज नैच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सो आई विल टेक एग्जांपल एनएफएस। लाइक दिस इज इंडिया, ये जम्मू कश्मीर है जहाँ एक एटीएम है, एंड दिस इज हम्म। तमिलनाडु जहाँ एक एटीएम है, ठीक है। यू टेक योर एटीएम टू दिस एटीएम, स्वाइप किया आपने एटीएम और 10,000 रुपए निकाल ली, ठीक है। अगले दिन आप यहाँ पहुंचे और फिर से 10,000 रुपए निकाल लिए। तो यहाँ कैसे सिस्टम को पता चलता है कि आपने कुछ पैसे निकाले हैं, मीन्स समझो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज था। ओके, यहाँ आपने 10,000 निकाला तो कितना बचा, 90,000। यहाँ आपने टेन 90। थाउजेंड निकाला तो कितना 90। बचा, 80,000। 80। अब जब एमपी में कोई एटीएम है वहां आप चेक करोगे कि कितना मिनी स्टेटमेंट निकालिएगा, चेक करिए कितना अकाउंट में है पैसा, तो दैट विल कम टू वॉट, 80,000 रुपीज। तो अच्छा, यहाँ के एटीएम को कैसे पता चला कि मैंने 20,000 रुपए निकाल लिए हैं? दैट इज ड्यू टू एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये नेशनल एटीएम को फाइनेंस कनेक्ट करता है सब। इंटरकनेक्ट। यस। सारे एटीएम से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। यस। सो ये भी एनपीसीआई ने स्टेब्लिश किया था। So this was end of your lectures, means end of this PDF, and I hope that if you will read this PDF again and again, means revise these PDFs Yes, again and again, again and again, again and again, then you will be I able will, to I will do that, sir. get a good command over your interview question.
Now let me tell you that what thing you have to study. आरबीआई क्या इशू करता है? That is a financial stability report and monetary policy. These two things you have to remember. Okay. हम्म। Rest of things are not that important. This you सर can ये read. रिपोर्ट डेली रिलीज मतलब वीकली रिपोर्ट है क्या, या No, फिर? not weekly report. क्वार्टरली रिपोर्ट रहती है, ईयरली रहती है, 6 मंथ वाली रहती है. यू कैन सी इट. नॉट डेली रिपोर्ट कमिंग. अभी आपने बिजनेस स्टैंड में पढ़ा ही होगा, इन्होंने रिपोर्ट क्यू निकाली फोर आरबीआई. क्यू थ्री Q1 Q2, हाँ Q1 एनुअल Q2 रिपोर्ट Q3 4 निकाली अभी. Q4। ओके. हाँ। सो in this you have to read like a full form. If you are free then you can read. एएलएम क्या होता है? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है. एआईआईबी क्या होता है? ये एएमएफआई वी हैव रेड. बीआईएस क्या होता है? जो स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई प्लास्टिक में इतना होना चाहिए, उसके नीचे. सर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा वो मैं पढ़ लूंगा। और सर एक यस. चीज और पूछनी थी कि सर जो मेरा कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है मैं उस पर भी अच्छी कमांड बैठा लेता हूँ, जैसे कि कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए, इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए। सो आई थॉट First ऑफ of रीडिंग all, दैट you हिस्ट्री must लाइक। have read corporate governance in your law school also. Then Corporate governance, sir, we were taught like a topic, not like if it was in COVID also, like some subjects were taught in COVID also, but we no, didn't focus in COVID. means I am So saying that corporate governance is what? What is the definition? Only that you have to read. Why we should follow corporate corporate governance? governance, corporate governance means the corporates are having the ownership or governance over anything. That's Corporate what governance I'm is an ethical way of doing business. If you are ethical following way of. corporate governance in a very lean way, Mm. then you are doing business very correctly, means ethical way. Okay. So that is a corporate governance. It is a very important for the any bank or finance company in any way. So at the end of this lecture, I would like to tell you that please read all these things very, very I deep. will sort. Read, again revise till the point you are selected there. What you want for it. Yes, That sir. is the NIBM. Okay. Yes, sir. Even I got a raise in 10 marks. Like yesterday, the final answer key released, and I also got an increase in 10 marks. What? So I think I may qualify for the top. How many I hope. marks you got? Like yesterday, the final answer key was released yesterday and day before. So I got an increase in 10 marks. Like the one that I marked was wrong, but I challenged those 10 plus. Like total, I've got to right now I'm at 250 marks, sir, and OBC category NC.